Assalamu alaikum. You are watching ELT streaming. This is Fawzia Saeed. Seek knowledge even if you have to go as far as China. This is a very famous hadith regarding seeking knowledge or acquiring education. So education and learning are very important in our lives. A famous person, John Davy, said that education is not preparation for life, education is life itself. Same as learning is a permanent process. Usually, we are very much concerned about our learning process, and we have limitized this learning process with examination. We usually say my learning is poor. I learn a lot, but unable to write in the examination. I couldn't learn a single word. I couldn't have time to learn. So these are the things. But first of all, we have to look into the deeper meaning of learning. Is it limited to education, or what is learning? So learning is the acquisition of knowledge or skills through study, experience or being taught. लर्निंग का प्रोसेस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें आप नई चीजें सीखते हैं, आपकी इल्म में इजाफा होता है। ये आप पढ़ के भी सीख सकते हैं, किसी चीज को एक्सपीरियंस करके भी सीख सकते हैं, और आप क्लासरूम में या किसी उस्ताद के जरिए भी जो आपको सिखाता है आप सीख सकते हैं। लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। Our today's lesson is about learning, primary learning theories, the ways in which we learn, importance of learning theories, and guidance to apply learning theories. So, I have told you the definition of learning, that learning is not limited to education. It is the acquisition of knowledge or skills through study, experience, or being taught. So whenever we are going to learn something, any skill, for example, if we are going to learn driving, so that made us change and it become a part of our life. That is the permanent change in our behavior. Whenever we are going to talk about learning, it is very important to know about the ways people learn. So the theoretical framework of learning processes are called learning theories. Learning theory explains the different ways people learn by focusing on the internal and external influences that affect the learning process. तो वो तमाम चीजें जो लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं वो इन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स में हमें मिलती हैं. There are various learning theories that teachers use in the classroom to benefit their students' learning. These theories help educators connect with their students by focusing on each student's strength. Teachers who practice learning theories with their students can help them better understand and retain information. जब टीचर्स कोई भी चीज सिखाते हैं क्लासरूम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पता हो कि हम कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर रहे हैं, हमारे लर्नर्स का जो उनकी नीड्स क्या हैं, उनका लेवल क्या है, और हम किस तरीके से वो स्ट्रेटेजीज जो है अपनी क्लास में उनको इम्प्रूव करके या मॉडिफाई करके इफेक्टिव लर्निंग आउटपुट्स के लिए यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर 5 प्राइमरी लर्निंग थेरीज which are very important in education. These are the behaviorism, cognitivism, constructivism, and humanism and connectivism. So we will look these theories separately. These theories are very important because you know that learning process can be complex and there are multiple approaches towards learning. So they can guide the teachers as well to improve their strategies and methods for teaching new skills and concepts to their learners. They affect the content found in course curriculums, change the ways, and they provide a clearer understanding of the way people learn. So teachers can provide more comprehensive learning strategies adaptable for their learners in the classroom. First of all, behaviorism.
behaviorism or behavioral learning theory was proposed by B.F. Skinner and J.B. Watson. They concentrate on the notion that students learn behaviors and information through external forces in the environment rather than internal ones. ये कहते हैं कि जो लर्नर्स हैं, बच्चा जैसे होता है, वो अगर लैंग्वेज सीखता है तो वो अपने एनवायरनमेंट से सुन के सीखता है, ठीक है। उसके बाद उसमें रेपिटेशन और रीइंफोर्समेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो दे बिलीव दैट learning is an external process, and learners acquire new information from their environment, external environment, and with repetition and reinforcement, they learn that skill. They believe on the positive reinforcement in the classroom. For example, if you are going and reward or you appreciate something, और नेगेटिव reinforcement को ये कहते हैं कि this is not a punishment but you have to remove certain things. For example, if you are going to introduce a topic and you want the assignment on the same day, so you can say that you are not allowed to go for a game period if you are unable to complete your assignment in the रिक्वायर्ड टाइम. तो जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो इसको ये कहते हैं कि पनिशमेंट नहीं है, बल्कि आपको ऐसी चीज उनसे स्टूडेंट से जो है वो हटा दें जो उनको फेवरेट है, जैसे गेम्स है या कोई ऐसी चीज, और उनको फोर्स करें कि आपने ये काम इस टाइम पर करना है. सो बिहेवियरिज्म की जो हम आप ब्रीफ बोलेंगे तो क्या है, एक्सटर्नल है, एनवायरमेंट important role play करती हैं, and by repetition and reinforcement you can make the permanent change in your students' behavior. Here are few behavioral strategies that a teacher can use in the classroom. Drills are repetitive ways of practicing and reinforcing material that students have learned in the classroom. Guided practice, you can guide students through an example or a model, appropriate behavior, and how to complete the question step by step. This will show students an appropriate way to respond when working on some problem. Regular reviews, reviewing material regularly help students retain information. Teachers can reinforce students with positive remarks, praise when they are doing well. तो ये हो गया behaviorism. Mostly the traditional you can say grammar translation method is according to behaviorism. ठीक है, आप अपनी क्लास में इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो. Then come to the cognitive theory. Cognitive theory is proposed by Jean Piaget. That is totally you can say it opposes the behaviorist theory that it concentrates solely on how people learn through internal processes. Behaviorism कहती है कि external environment is important. They said that along with external, internal environment or internal processing is very important. It states that the learner is an active participant in learning because they have their own skills, knowledge, and memories that can benefit when they learn. The process of cognitive learning involves the learner seeing something new, processing it internally, and acting on it somehow. When students learn something new and observe it, perceive it, and interpret the information by categorizing in their mind with other memories to remember it. वो कहते हैं कि माइंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट्स जो है उसका इंटरनल प्रोसेस एक मेमोरी का है. उसके अंदर पहले से जो चीजें होती हैं उसको न्यू इंफॉर्मेशन को उसके साथ को रिलेट करता है, और वो नई चीज को पुरानी परसीव्ड मेमोरी के साथ मिला के उसको लर्न करता है. There are cognitive strategies which you can apply in your classroom to better learning. So इसमें जो है
discussions हैं that you can promote discussions among your students about daily lessons to encourage their interpretation of the material and expand their understanding by observations. Reflections हैं that you give your learners a chance to reflect individually on what they have learned. ठीक है, उनके personal reflections क्या हैं. They can write in reflection journal to process their learning before memorizing it in minds and moving to new material. Visualization है. Visuals आपको पता है कि permanent होते हैं. Provide visual stimuli when possible to improve students' understanding of something new and remembering it. Visualization allow teachers to categorize the new visuals with the information they have learned previously. जो previous information है, आप जब visuals उनको दिखाते हैं, that is the permanent learning. So cognitive theory concentrates on how the brain receives information, stores, processes, and develops new concepts. तो cognitive theory को आप अपनी क्लास में according to your situation apply कर सकते हैं. Now come to the constructivist theory or constructivism theory. That is, the pioneers of this theory are the Jean Piaget and Vygotsky. In this theory, they state that learners create an understanding of new concepts based on their prior knowledge. जो उनके पास previous knowledge है, जो उन्होंने पहले से हासिल की हुई है, उस पे वो अपना नया कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं. दिस थियरी सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स कैन बिल्ड न्यू नॉलेज बाय डिस्कवरिंग कनेक्शंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड इंफॉर्मेशन. व्हाटएवर दे हैव ऑलरेडी लर्नड and what they are going to learn, they make connections between these two informations and then they link new experience to a previous memory or events so that their understanding of the world is expanding and changing. Since all learners have different prior experiences and knowledge, constructivism suggests that learning is unique for each person. So here are few strategies that you can apply in your classroom regarding constructivism. Research projects हैं, field trips हैं, experiments हैं. Research projects, you can give a student to chance to research information regarding a topic and allow him to relate new information to what he has already learned in the class, and then he has to present. Field trips हैं. Going on field trips allow learners the opportunity to see concepts learned in class in a real world environment and link the two experiences. They can then form a better understanding or concept of what they have learned at school. Then experiments. Consider providing learners with the freedom to conduct an experiment on something they have discussed and read about in class. This allows students to perceive the content from a hands-on point of view so they may better understand the material. आप उनको कुछ पढ़ाते हैं, for example आप इंग्लिश क्लास में डायलॉग पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको अलाउ करें कि वो रोल प्ले करके एक्सपेरिमेंट करें कोई भी टॉपिक लेके और वो उसको जो है रियल लाइफ में प्रेजेंट करें. या आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट कोई भी चीज सिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसको कहें कि आप इसको खुद से परफॉर्म करें, तो वो उनकी जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाती है. दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्टिविज्म. सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज पार्ट ऑफ दिस, और उसमें ये है कि जो लर्नर है वो सोसाइटी से, लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, और वो सोसाइटी से और अपनी जो ग्रुप्स हैं उसमें से भी सीखता है. तो दैट इज ऑल्सो इनटू दिस थ्योरी के जो सोशल आपका सोसाइटी है, आपकी जो सोशल एक्टिविटीज हैं, आपके जो ग्रुप डिस्कशंस वगैरह हैं, उनसे जो आपके लर्नर्स हैं वो बेटर लर्निंग करते हैं. सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में हम आ जाते हैं, तो इसमें आपकी जो है, मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस एंड नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज, इंटरेक्शंस विद अदर्स एंड एनवायरनमेंट. इन योर क्लासरूम यू कैन अप्लाई ग्रुप असाइनमेंट्स, और ये स्ट्रेटजीज हैं इसके लिए. डिस्कशंस हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, उसके थ्रू आप अपनी जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज है उनको बेटर कर सकते हैं. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की तरफ अगर हम आते हैं
तो इट इज proposed by Abraham Maslow, Carl Rogers, जेम्स एफ टी बोगेंटल, ये इसके पायनियर्स हैं। एंड दिस लर्निंग थ्योरी फोकसेस ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। वो ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, एंड स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम एजुकेशन व्हेन टीचर focuses on ways to teach all aspects of learner by engaging their social skills, intellect, practical skills, feelings at a part of education। यानी whole human being के अंदर जो आपकी हैं एबिलिटीज उनको ब्रोई कार्ड ला के टीचर जो है वो आपको सिखाती है या सिखाता है। सो दैट इज बेस्ड ऑन the learner's need, that teacher has to be aware about the learner's needs in this approach, and it gives the learner more input in how they can learn. The goal of student-centered learning is to create lessons with the students' needs as the top priority. Teacher can implement this theory in their classroom by giving learners different approaches to learning classroom content and multiple ways to practice in the classroom. अब इसमें आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो कौन सी हो सकती हैं? ह्यूमनिस्टिक लर्निंग स्ट्रेटजीज दैट यू कैन ट्राई इनटू योर क्लासरूम कैन बी कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग गिव्स स्टूडेंट्स अ चांस टू वर्क टुगेदर ऑन एन असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। Each student can find a role within the group that exemplifies their own strengths to accomplish the objective of the task। आप उनको कोई ग्रुप असाइनमेंट देंगे कोऑपरेटिव लर्निंग में, जिससे उनको एक दूसरे का भी ख्याल रखने का होगा, और यू हैव टू अलाउ और असाइन द रोल्स ऑफ एवरी स्टूडेंट के हर स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करे, और जो है इस तरह से उनकी जो लर्निंग होगी वो एक दूसरे से भी सीखेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज भी बाहर निकलेंगे, और उनकी जो ह्यूमन बीइंग का जो उनका वो है वो भी पॉलिश होगा एस्पेक्ट। सो चॉइस बोर्ड्स हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट कैन यूज चॉइस बोर्ड्स इन मोस्ट ग्रेड लेवल्स and subject to choose from a variety of tasks on the board and complete a certain number of tasks as directed by the teacher. Students can choose the tasks that allow them to highlight their skills and understandings of the material. वो अपनी आप उस पे चॉइस बोर्ड्स उनको पे करवा सकते हैं काम के जो टास्क हैं वो हाईलाइट करें अपने स्किल्स के थ्रू, और उसको वो जो है प्रेजेंट करें, और आपको पता चले कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई है। डिफरेंशिएटेड लर्निंग है, इट प्रोवाइड्स स्टूडेंट विद मल्टीपल वेज टू व्यू द सेम कंटेंट, अलाउ देम टू लर्न एट अ पेस दैट इज हेल्पफुल टू देम। फॉर एग्जाम्पल, you try giving students the same article to read at different reading levels. Student can choose the one that helps them comprehend the material most effectively। ठीक है, एक आप टेक्स्ट उनको दे दें और उस पर डिफरेंट आप रीडिंग लेवल्स के अप्लाई करें, और वो उसको चूज करेंगे कि उनके लिए कौन सा बेहतर है। तो उससे उनकी क्रिटिकल जो थिंकिंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होंगी, उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, और उनकी होल जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होगी। दैट इज द ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, एंड यू कैन अप्लाई इट बाय दीज स्ट्रेटजीज। Now come to the next or the last one which I have taken here, that is the connectivist theory or connectivism theory. It is proposed by George Siemens and Stephen Townes, and this theory is developed and focuses on the idea that students learn best by navigating different digital networks, using technology and using those networks to learn information। तो वो कहते हैं कि जो डिजिटल नेटवर्क्स हैं और वो जो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देते हैं उसके थ्रू स्टूडेंट्स बेहतर जो है वो अपनी लर्निंग करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो स्टूडेंट सेंटर्ड, एंड दिस थ्योरी ऑफ लर्निंग रिलाइज on utilizing those digital networks to increase our students' learning mostly independently। तो इसमें स्ट्रेटेजीज कौन सी हो सकती हैं? स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज हैं। कनेक्टिविज्म कंसंट्रेट्स ऑन स्टूडेंट लर्निंग इंफॉर्मेशन बाय रिसर्चिंग इट ऑनलाइन, so focusing on activities where students do most of the learning and their own helps them take initiative in their own learning। आप उनको कोई टॉपिक दे दें, उनको कहें कि इस पे रिसर्च करें,
गूगल से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और फिर आप उसको डिफरेंट उसके एक्टिविटीज उनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए आप उसको इवेलुएट कर सकते हैं. Readily available technology, whether students use their own devices such as cell phones, or the school provides tablets or laptops to students. Having students use technology frequently in the classroom encourages them to do their own probing to learn. ठीक है, आप उनको आदत डालें अगर उनके पास खुद हैं. नहीं तो आप स्कूल ने जो आपको मटेरियल्स, जो आपको टेक्नोलॉजी के गैजेट्स या डिवाइसेस दी हुई हैं, उस पे आप उनको सर्चिंग का बताएं और उनसे कहें कि अपनी लर्निंग इस टॉपिक पे या इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपनी लर्निंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं. Then social networks, students can they use usually social networks to look for answers or to questions. They can also ask questions and connect with people digitally who might respond to their question to further increasing their knowledge and understanding of a topic learned in the classroom. तो social networks जो हैं वो भी आप उनको सिखा सकते हैं कि वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि you can make them fruitful by utilizing those social networks to extract knowledge regarding their level or regarding their classroom topics. तो ये था आज का लेसन हमारा, जिसमें हमने लर्निंग के बारे में बात की, लर्निंग थ्योरीज के बारे में बात की. होप यू हैव the understanding of learning in a better way, and you have the ideas of learning theories, frameworks of learning, and you can apply in your classroom in a better way to make your teaching learning process more effective and meaningful. I'll inshallah meet you in my next video. Till then, Allah Hafiz.